शुरू कर चुका है। Hello, everybody, please. Sir, please pardon me. सब माफ कीजिएगा जरा, please. हम अब मिथिला दरभंगा is the land of speakers of Maithili, and I will be committing a crime if I do not start the proceedings in Maithili and with silent prayers for the blessings of Mata Janak Nandini Janaki. So can we please stand up for a moment and silently call for the blessings of Mata Janak Nandini Janaki? Just about a moment. देखिए देवीलाल, आधा मिनट देख लो। Please resume your seats. मिथिला में रहिकर मैथिली में स्वागत नहीं करे अपने लोकनिक हम अपराध भाव से ग्रस्त छी, लेकिन हमरा 50,000 श्रोता मिथिला एवं भारत से बाहर से हो छथि, ताहि दुआरे हम सब बाध्य छी जहाँ तक संभव है हम सब हिंदी के प्रयोग करब। भ सकैत अछि अंग्रेजियों के प्रयोग हो, अगर अपने के असौकर्य हुआ तो माफ कर दे, नहीं तो ई बुझ कर जे भाषा तो एक लिफाफ भेल, भाव माध्यम छै। प्रोग्राम के हाईलाइट दै छी। हमर नाम भेल श्रीश चौधरी, हमर गाम पिंडारू छै। हम सब हेल्थ सेक्टर में काज करै छी। नौकरी हम IIT मद्रास में करैत रही, रिटायर भ के गाँव में रहै छी। एतऽ जतेक गोटे छी सब हमरा से बेसी विशिष्ट व्यक्ति छी। उनकर परिचय देबऽ लागब तो 1.5 घंटा काफी नहीं है, ताहि दुआरे हम व्यक्ति विशेष के परिचय नहीं दऽ कऽ प्रोग्राम के हाईलाइट दै छी। अहाँ लोकनिक अनुमति से हम डॉक्टर रूपकला सिन्हा, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड प्रिंसिपल ऑफ MRM कॉलेज के आग्रह करै छी जे अध्यक्ष के कुर्सी पर बैसे। प्रोफेसर रूपकला सिन्हा will take the chair of the meeting today. Please be kind enough to occupy the chair. I also request Dr. Amod Jha, the local secretary of the Indian Medical Association, to be the chief guest today. Now the highlight of the program is following. We have only 3 speakers. Please do not feel intimidated. The welcome note will be given by Dr. Nisha Saxena on behalf of MRM College. Dr. Nisha, please. Please allow me to introduce Dr. Nisha. Dr. Nisha Saxena has been in Darbhanga for quite a few years. She has an MSc in chemistry from the University of Delhi and a PhD from the Central Drug Research Institute, Lucknow, only one of its kind in India, and the part of the research for COVID and Covishield was done at CDRI. Please give her a hand. After Nisha Saxena, we will take another 5 minutes to tell you about the local initiatives in health that Panchajanya Public Charitable Trust is doing, and then Mr. Devilal Sharma will be invited to make the presentation. Please bear with me. आप लोग अगले 5 मिनट तक डॉक्टर निशा सक्सेना का स्वागत भाषण करेंगी। डॉक्टर निशा सक्सेना CDRI से PhD हैं। उसके बाद पंचजन्य ट्रस्ट की ओर से ट्रस्टी प्रोफेसर प्रदीप कांत चौधरी आपको स्थानीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में हमारे प्रयासों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्या समस्याएं हैं वो बताएंगे। फिर मिस्टर देवीलाल शर्मा टेलीमेडिसिन पर आपकी बात कहेंगे। उसके बाद हम लोग आपका कमेंट्स इनवाइट करेंगे बारी बारी से, और देवीलाल शर्मा जी एक बार आपको उत्तर देंगे, क्योंकि इन विषयों पर कोई निर्णयात्मक निष्कर्ष नहीं हो सकता है। We can never reach a conclusion on these subjects at this stage. फिर मैं
प्रोफेसर रूपकला सिन्हा को, प्रोफेसर डॉक्टर आमोद झा को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी टिप्पणी दें। फिर एमआरएम कॉलेज की ओर से निशा जी के ही एक कॉलीग धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हम आशा करते हैं कि 8:15 बजे इस कारागार से हम आपको मुक्त कर देंगे। The meeting should end by 8:15, 8:20, and then Panchajanya Public Charitable Trust and IIT Madras Alumni Association together have organized for a little drink and some snacks. Please have them and then leave. I hand it over now to Dr. Nisha Saxena. Please. Thank you so much, sir. A very warm greetings to all the dignitaries present online and offline mode. I am Dr. Nisha Saxena, Assistant Professor in Department of Chemistry, MRN College. As sir already introduces me, I think it's enough for me. I welcome Dr. Roopkala Sinha, Principal and Chairperson of this seminar, and Engineer Devilal sir, who is an alumni of IIT Madras. On the behalf of my institution, MRN College, at this prestigious seminar on a very flaming topic, that is advances in telemedicine. I welcome our keynote speaker, Engineer Devilal Sharma, who is an alumni and founder CEO at Datahive Labs Private Limited, Bangalore. Before handing it over to our chairperson, I would like to introduce my college. We are offering services, not exactly services, education for 11th, 12th undergrads in 19 disciplines and postgrad in 10 disciplines. We have been established in 1958 and we got affiliation in 1962 for UG classes, and then onwards we got affiliation in 1985 for PG classes. We have more than 6,000 students at this campus for 11, 12, UG and PG. We offer no fee for female institution, and this is the only thing we can offer to students, along with the education, the best education we all have. We are 36 in this campus as a faculty member, along with our chairperson, Dr. Roopkala ma'am, who is principal of this college. In the leadership of her capability, she is making this in the progress of making this college a best institution for women in the LNMU University. So now I would like to stop myself and call Dr. Shirish sir. Thank you so much, sir, for giving me this mic. Thank you so much. Professor Pradeep Kant Chaudhary, also like me, belongs to Pingaraj. He was until recently a professor of history at the University of Delhi, but he sought voluntary retirement to work full-time at his village. He is also the founder of Anadi Foundation, which is trying to create, or I should say, which is trying to revive the industrial culture of this part of India. Currently, his organization dyes clothes and is reviving traditional crafts, and then these products are exported to markets in Europe and North America and to other cities in India, and he intends to create employment in hundreds of thousands. May God be with him. He also happens to be a trustee. वो हमारे पांचजन्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, और स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य की क्या समस्याएं हैं वो मरीज और जनता के दृष्टिकोण से आपके समक्ष एक छोटा सा ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, और पांचजन्य ट्रस्ट के प्रयासों का भी बहुत लघु छोटा सा वर्णन देंगे। प्रोफेसर प्रदीप कांत चौधरी, प्लीज। Thank you, sir. Professor Roopkala Sinha, chairperson of this meeting, and friends. This is a great opportunity for me to speak before this gathering. I am reminded of a very popular Hindi film song
Diya or Tufan, which was very popular in the spirit of freedom movement. Panchjanya Trust is trying to do something which is the story of Diya and Tufan. We are facing many challenges. Challenges are coming from corporate sector, but challenges are also coming from the mindset which people have developed. So we are facing two kinds of challenges. One is how to convince people that not-for-profit health centers can also deliver quality. Not only health sector, but many other organizations are facing this problem that if you are not-for-profit, then you are not worth. People are going to hospitals which charge you huge amount of money for simple pregnancy and tests and deliveries and other things which are quite normal things. So this is one of the biggest problems, and at Panchjanya Trust, we have been facing this problem. For example, we started a project called Samajhdar Didi Abhiyan. And this was, we were trying to convince rural women that it's a wise thing to get some few basic tests done before any problem develops in your life. Simple tests like blood pressure and sugar and weight monitoring, and blood test will give you anemia. And so we developed 10 parameters. But it was very difficult to convince those women to come for the test. It was completely free of cost. We raised a fund for that, and we tied up with one of the labs in Darbhanga to come and take the sample and do it. But there was very lukewarm response. One thing which we realized that it was partly due to Corona also. But this was our dream, and we are still working on it, that if we convince people to come and get their basic health tests done, basic, just a few basic things, then it can give them an idea that how they can save their future problems. They can do many things. So this is one problem. Change the mindset and change the attitude towards not-for-profit organizations like us. The second thing is that how to deliver who comes to us, who come to us. For example, we should have doctors, we should have equipments, we should have facilities which we can deliver. All the time people are comparing us with private hospitals and private organizations. Despite that, we have done a little bit of work in this field, and there is one doctor who is there, Dr. Ganeshji, who is here with us. He is available there for at least 5 hours a day. And apart from that, we have some basic facilities like oxygen cylinders, oximeters, and some basic facilities which any nursing home or hospital would have. But we are working hard, and we are trying to move in a direction where we can meet at least some emergency needs. For example, trauma center or some kind of accident that takes place around our village or any of the nearby village. So that is our aim. We are trying to do that. But on the whole, as we were listening yesterday also, it was a recollection, memory of one person at the meeting yesterday who said that how his attitude changed when his wife was met with an accident and she was given medical attention immediately at this center. So there's a need, and not only need, our chairperson, Professor Sirish Chaudhary, his basic aim is to create a culture of self-help, and to provide opportunity to people to improve their life. Let's not be dependent on government agencies and outside corporate agencies to fulfill our need. So these are some of the things which we are trying to do. There's so many things which we can say, but time is a little short. So I am now handing over mic to our next speaker. Thank you, sir.
देवीलाल शर्मा जी आज के स्टार प्रेजेंटर हैं। इनका परिचय मुझे कुछ शब्दों में देना आवश्यक होगा। देवीलाल शर्मा जी राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में एक गांव के रहने वाले हैं और भारत में जिसको ग्रास रूट्स की प्रॉब्लम्स कहते हैं उससे भली भांति परिचित है। इनके यहाँ तो पानी की भी समस्या है। यहाँ आने पर इनको सबसे अधिक आनंद यह आया कि यहाँ इतना पानी है। वहीं रहते हुए इन्होंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की, फिर IIT मद्रास से इलेक्ट्रिकल में डुअल डिग्री किया, बीटेक एमटेक किया, फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया। फिर इनको इनके गांव की याद में सताया, अरे कुछ तो करो। Then he quit a very lucrative job and started his own company, which now designs softwares to not to replace the doctors. In the foreseeable future, doctors are irreplaceable, but to make better connect between doctors and patients. Ladies and gentlemen, with your permission, I am going to invite Mr. Devilal Sharma to tell us about the advances that have happened in this field. I must also tell you, it is not commercially motivated. यहाँ वो सॉफ्टवेयर बेचने नहीं आए हैं। आप में से जिन लोगों को रुचि होगी उनका नाम नंबर हम लोगों ने ले लिया है। आपसे पूछेंगे आपको चाहिए तो वो सॉफ्टवेयर आपको फ्री दे देंगे, आप अपलोड कर दीजिए। लेकिन आप जिसको कहते हैं सहानुभूति पूर्वक सुनना, और एक होता है वकील की तरह सुनना, तो वकील की तरह नहीं सुनिए। आप हमारे साथ एम्पैथी में सुनिए कि हमारे कहने में कुछ मेरिट है। अगर है तो फिर हम उसके बाद डिस्कशन करेंगे। देवीलाल शर्मा प्लीज। Thank you, sir. Good evening, everyone. Thank you all for coming, and you have come in such a large number. Thank you very much. So we have online audience who joined through Zoom, and we have a house full of offline audience here. I am going to share my screen. Can someone confirm or from the online audience if they can see my screen? Hi Krishna, can you see my screen? Yes, I can. Thank you very much. Okay, let us start. This seminar wouldn't have been possible without IIT Madras Alumni Association. And IIT Madras Alumni Association is a 58-year-old organization. I, being part of IIT Madras Alumni Association and representative, would like to introduce briefly. IIT Madras Alumni Association is 50,000 plus network of 50,000 plus alumni, and largely have two missions. One is mission 5,000 ignited minds, where volunteers from the alumni join and try to make a difference, try to go and create things, try to go help people, try to
organize events, try to connect with different entities and make a difference, right? And another mission is Mission Million Smiles. That is, through these 5,000 ignited minds, if you can change life of the people, if you can bring smiles to the faces of people in the country or in the world, then they come into the Mission Million Smiles. And all this mission is for 2 years. So this is the target for 2 years, that we have 5,000 ignited minds and million smiles. I mean, I just jumped to the achievement we have. So we are already at 32% in our mission ignited minds and 28% in our million smiles mission. With this, I would like to thank you again for coming from the IIT Madras Alumni Association side, and let us start with the topic, that is advances in telemedicine. So I'll go through a few things which are very basic, and then we'll see how telemedicine fits into it and how advances in telemedicine is helping us. So take an example of a young lady who is from a village in Rajasthan. She was suffering from fever, weight loss and fatigue. And after a few weeks, she went to a doctor, and the doctor, with a very basic test, found out that she had tuberculosis. And it was also made aware to the guardians that tuberculosis. And they went home, and the symptoms suppressed, and they stopped the medicine. So I am not here discussing the typical problem of tuberculosis. That's very well stated. Many efforts have been made here. But she then went to another doctor when she again became ill. And she changed doctors a couple of times later to go to the same doctor who she went in the first place. And in that, she lost a couple of months. Because the first doctor is the natural doctor to go to, and she went there. Now the problem here is basically doctor could not help in such cases, because doctor cannot track what the patient is doing, and doctor cannot even assess what the treatment is happening. Right? Another gentleman, who is a young gentleman, diagnosed with diabetes. His father is a diabetic person. He is taking medicine on time and managing the diabetes very well. But this young man diagnosed with diabetes, and he earns well. He is from urban background. He did not actually took care of diabetes, and at the age of 38, he suffered kidney failure. Now with the renal failure, all family has been awakened, and they are worried that what to do. But in the simple, that diabetes can be managed. To my knowledge, diabetes can be managed to large extent throughout the life. But the kidney failure and renal failures are very tough to manage. In this case, again, there's a problem of awareness, problem of education to the patient, but the doctor is helpless. Doctor cannot do everything. I want to take a moment here and state that these two cases doesn't cover all the exhaustive cases, but thousands of people suffer from different kind of issues, and where doctors can help very little. Let us go to what are the real issues here. So if you look at, we have talked to so many doctors. We have also gone to remote villages and remote areas, and found out that cost is the main issue. Cost of commute and the cost of the time you are absent from your work in order to go to the doctor. Another issue is there is no coverage for the insurance for all this. The second one is awareness. Because of awareness, people delay in the first visit to the doctor, and also sometimes people are confused with so many specialties whom to go. The third thing I want to give an example here is, say a patient has a problem and walks into a doctor's office.
state the symptoms. Doctor, if required, make the patient undergo some tests and then write a few medicines, and the patient leave with a piece of paper. After that, what happens? The doctor has no hooks to connect with the patient. Doctor has no means to know whether the patient is getting well, is getting worse, or what is up to. Let us look at a couple of relationships a doctor and patient has. One is like paternalistic, where the time is not there for to go into the consent and legalities, and the doctor takes a lot of and the right decision in order to not jeopardize the health of the patient. Some kind in some kind of trauma and accidents. Another is interpretive. In interpretive, what happens is a doctor theoretically tells the patient what the problem is, take his consent, and does the treatment according to what he thinks the best is. The third one is informative approach, where a doctor actually give factual data, give all the options to the patient, and patient choose what treatment he would like to undergo. The third one is deliberative approach, where the doctor behaves like a friend or a teacher and give the treatment and assess the patient to choose the right treatment. I'm sure that all of you, like the doctors, would be already knowing all this, and you take different approaches in different cases, and sometimes the mix of all of them, right? Let us jump to the technology in healthcare. The technology in healthcare have come a long way. If you look at last 100 years, it has come from EEG, encephalogram, or ECG also came around similar time, to the pacemakers and CT scan and MRIs in 70s. Fast forward to 3D printing of body parts in 2013 and gene editing in 2016. And with the help of software and information technology, telemedicine has been a reality. So what is telemedicine? Many people ask me outside also, what is telemedicine? Telemedicine is delivery of medical consultation, patient education, health information, or anything related to these, any service related to this medical, delivered with digital technology is telemedicine. I have divided the telemedicine into 5 parts, like what these 5 parts constitute telemedicine. One is the availability of high-speed internet, which connects doctor to the patient. Second is if the data is coming through the digital means, there are a lot of noise. There is a right data, wrong data, and the a variety of data. So you need some kind of clinical decision support system where the doctor can be assisted to diagnose. The third one is when the doctor needs to examine the patient. There are Internet of Things devices. So IoT devices are with the patient, and they keep sending the data over the internet to the doctor, and doctor can monitor the data at his place remotely. And the last two is diagnosis lab and pharmacy. So diagnosis lab and pharmacy can be automated, and can be optimized with the help of telemedicine. So how telemedicine has been in India? Telemedicine, Government of India has been putting a lot of effort in telemedicine, and they also launched a satellite called HealthSat, and from there to establishing the telemedicine standards, having electronic health record standards. Fast forward to 2020, in the middle of COVID, they came up with telemedicine practice guidelines, and that has become a booster for telemedicine adoption. In 2022, government has allocated 200 crore rupees for digital health. This is one example of telemedicine being delivered in Bihar. In the through ISRO. So ISRO mobile vans were used
for telemedicine in during the Fosi River flood in 2008. I don't know if you guys remember or anybody encountered this, but ISRO has been playing vital role. But it was too tough then, and today it has become very easy. It has become so conducive that telemedicine is a reality, and we'll look at what all those factors. Right? Before that, let us look at what are different kinds of telemedicine consulting. So one is synchronous consulting, where a doctor and a patient is available at the same time. They connect over video or a voice call, and the doctor asks suitable questions to the patient. Patient replies or share the information, and doctor then take action or send the prescription. Patient then goes and buy the medicine. Another kind of teleconsulting is asynchronous teleconsulting, where a patient registers his symptoms to the doctor, and doctor look at that at another point in time whenever he's free, and then he send back his prescription or advice to the patient, and then the patient acts accordingly. The third one is where patient goes to the doctor over telemedicine platform. The doctor need to ask a specialist or super specialist something. He discusses the case with another doctor, come back with the final advice, and send it back to the patient. Let us look at what are the barriers for telemedicine. I mean, we looked at ISRO launching satellite for enabling telemedicine to the remote areas. Now today, if we just point out, limited access to high-speed internet is first thing which was a barrier for telemedicine. Right? Another one is access to the smartphone. These two has been almost completely relegated, almost not present now. We have very high-speed internet even in remote areas. I mean, there are exceptions, but thanks to different ISPs, they have really provided high-speed internet. Today we have 80 crore smartphone users in India, which has enabled all kind of communication and the telemedicine to the remote and rural areas. Credentialing and licensing. So now India has allowed telemedicine with guidelines. Earlier, people or the doctors were afraid. Some states were asking doctors to not practice telemedicine. Some states were allowed. Doctors were also not sure how to do. Now Government of India has clear guidelines on what can you do, what you cannot do, and it's pretty liberal. I have studied them full. I can share it with you. Sustainability. Whether it will be adopted in rural or remote area or not. So you know that in rural and remote areas today, people are using Facebook, WhatsApp, and other social networking websites and have high-speed internet. They spend more time than you and me. They spend more time than you and me, right? So it's not an issue that adoption is an issue. Monetization issues. So some people think that how do you monetize telemedicine? So this part is being worked out by many companies and many innovative startups. Some healthcare providers, they are doing very well and adopting this method and reaching to more and more people. Interoperability. Interoperability means, say you write a prescription. How do you upload it? How do you share it with patient? Even if you share it with patient, how does the patient share it with the medical shop or a pharmacy? Or how does a patient can share the prescription with another doctor? So this is called interoperability. Government of India has been working very hard. I feel, in last couple of years, since 2017, they came up with National Health Stack in 2018, and since then they have been working under NDHM, ADM, and now ABA, all that, right? So government of, and we are very close to have a standard out very soon for the under IHR. That's called interface for health, right? So, and last one I want to highlight here, because many people told me technology is too complex to use. Many doctors especially told me that
when they start with like if you pitch them for a technology usage, they say that they have to hire another person to use the technology. They have to have a couple of people in their IT team to use technology, but that's not the case. IT companies have been working day and night to make usage of technology very easy, right? So I want to highlight that out of, if I count here, out of 7 points, 5 have been already solved, 2 have been working out. So we are very close to pushing telemedicine to anywhere in India and covering everybody through telemedicine. And I feel that telemedicine is the way to cover rural India. So now I want to briefly introduce my product. Sir has said very rightly that we are not here for any promotion, any kind of sale of activity. I've come here 4 days back. I've been okay. So राइट सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं 4 दिन पहले दरभंगा में आया हूँ और बहुत सारे डॉक्टर से मिला, गांव में लोगों से मिला, एनजीओ से बात किया और ये देखा कि जो हम कर रहे हैं टेलीमेडिसिन में इनोवेशंस ला रहे हैं, टेलीमेडिसिन को इजी बना रहे हैं यूज करने के लिए, which is the real need of the people, which is real. So when I definitely visited rural areas in Rajasthan, Gujarat, Karnataka, even urban areas. तो हमारा जो प्रोडक्ट है हम लोग उसको किस तरह से पोजीशन करते हैं आपको बहुत ही ब्रीफली बताना चाहता हूँ. और so this is the problem we are solving, right? Delay in first visit, people don't come and visit doctors. Second thing is, and we have already talked about why they don't visit. Second thing is video consulting, right? Everybody's mind, आप बोलेंगे कि वीडियो कंसल्टिंग कर लो, वहां से वीडियो पे बात कर लो डॉक्टर से और आने की जरूरत नहीं है, पैसा बच जाएगा, कम्यूट बच जाएगा. वीडियो कंसल्टिंग पॉसिबल नहीं है सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी में, टाउन्स में पॉसिबल नहीं है. आप डॉक्टर अमोद कुमार झा के क्लिनिक में जाएंगे तो इनके 20 पेशेंट बैठे हैं वहां, कैसे वीडियो कंसल्टिंग करेंगे? पहले उन पेशेंट को देखेंगे कि वीडियो पे बात करेंगे. दूसरी बात यह है कि वीडियो कंसल्टिंग में एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है जहां पे पेशेंट भी अवेलेबल है, डॉक्टर भी अवेलेबल है. आपने 10:20 का अपॉइंटमेंट लिया है, 10:19 पे आप खाली नहीं बैठ सकते. एक पेशेंट आपके सामने आया, आप उसको देख रहे हैं, 10:20 में उसको नहीं छोड़ सकते. At the same time, the rural patient also may not adhere to the timings. So this is the problem. The third and most important thing we are focusing on is doctor-patient communication. Once the patient go out of your clinic or your consultation room, आपके पास कोई भी हुक नहीं होता है, कोई भी मीन्स नहीं होता उससे बात करने का, पर्सनलाइज तरीके से बात करने का. आप कर सकते हैं, आप फोन उठाओ, उसका बात करो कि मैं ये डॉक्टर बोल रहा हूँ, आप मेरे पास आज आए हैं, आपको ये बीमारी थी, आप दवाई ले रहे कि ले रहे, इसे रोज बात करो, सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए. कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. पर टेक्नोलॉजी कैन इनेबल दीज थिंग्स इन दिस मैनर दैट आपके हिसाब से पर्सनलाइज तरीके से उस पेशेंट से बात की जा सकती है विदाउट यू बीइंग देयर. So we are focusing on asynchronous doctor connect. Patient can connect with the doctor, and doctor can come and look at those requests when he is free, during lunch, in the evening, or whenever. And the patient will be notified that doctor will come back after 10 hours, or doctor will come back after 6 hours. Because patient तो आ ही नहीं रहा था, वो तो 2 दिन और नहीं आता, 2 दिन तक डिले करता रहता. तो उस बाउंड्री को पुश कर रहे हैं हम लोग. हम उसको कुछ नहीं कर रहे कि जो पेशेंट आ रहा है उसको कोई रेटिंग दिखा के इसको इस डॉक्टर को बता दिया, उसको बता दिया, इसी कर दिया, वो एक चीज है. पर हम उस बाउंड्री को पुश कर रहे हैं जो पेशेंट आ ही नहीं रहे डॉक्टर के पास, जो इग्नोर कर रहे हैं, एंड दे गो इनटू डिफिकल्ट सिचुएशंस. Sorry. Another thing is personalized patient engagement. We are working on personalized patient engagement. The third and most important thing is all of this will happen in hyperlocal environment. Means पिंडालूच का पेशेंट बॉम्बे के डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, पिंडालूच का पेशेंट दिल्ली के डॉक्टर को नहीं दिखाएगा, क्योंकि जरूरत ही नहीं है. दरभंगा तो मेडिकल हब है, दिल्ली के डॉक्टर को क्यों दिखाना? क्योंकि आपके पास वीडियो कॉल अवेलेबल है, इसलिए दिल्ली के डॉक्टर को दिखा देंगे. वो गलत है. गलत इसलिए है, गलत कुछ नहीं है, गलत इसलिए है, मैं बताना चाहता हूँ कि आपने दिल्ली के डॉक्टर को दिखा दिया, फिर आपको वापस दिक्कत आई, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, आप कैसे जाएंगे उसके पास? फॉर प्राइमरी हेल्थ
seeing a remote doctor, far away doctor is not feasible, and I believe that 95% of primary healthcare will be hyperlocal, or maybe 100%. I'm not sure, but I believe largely everything will be hyperlocal in primary healthcare. So we are developing ecosystem where a doctor is the center of the whole ecosystem. The lab, the medicine, advice, any other advice. For example, he has to go to a physiotherapist and do something, right? Not only medicine. That kind of ecosystem we are building in a local, hyperlocal environment. So what is our product? I mean, very briefly, our product is like can become a family health app. You know, need not everybody has a family app or smartphone. एक जने के पास पूरी फैमिली के अंदर एक ऐप है तो इनफ है और वो पूरी फैमिली का ध्यान रख सकता है. लोकल लैंग्वेज में होगा हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, right? Yeah. And you can talk to the doctor anytime, 24 hours, and doctor will come back as soon as possible, and you will know when the doctor will come back, even before doctor comes back, right? So you have a timer when doctor will come back. Doctor के लिए early engagement है patient के साथ, so that the patient don't go into a difficult position to treat. It takes fraction of your time because we use artificial intelligence to summarize what the patient is saying. Patient is saying he's sending you a voice note or a photo, or he has undergone a couple of doctor-like questionnaire. We summarize everything and give it on one screen. Even the voice note, we read the voice note automatically through the machine learning. We understand what is being said in the voice note and we summarize for the doctor. If he has sent a photo, we find out what is in the photo and we summarize it for the doctor to the large extent. I'm saying that artificial intelligence cannot replace doctors, cannot work for 100% accuracy, but it can really help doctor automate and get helped a lot. Right? And like the third thing which I like the most is engaging the patient throughout the illness and beyond. I mean, this is the last slide, and here I am just trying to say that it's a value proposition for doctors as well as patient. And most of the other applications also, not only what product we are building more on tier 2 and tier 3 orient and rural India oriented product, but everybody who is doing anything on telemedicine is a real value proposition, is what I say. Thank you. आप लोगों के धैर्य के लिए मैं आपकी संक्षिप्त प्रशंसा भी नहीं कर सकता हूँ. यहाँ असुविधा है और हम लोगों ने कुछ ज्यादती भी की है आपके साथ. आपके आने की प्रतीक्षा नहीं की और समय होते ही शुरू कर दिया. हमारी लॉयल्टी बटी हुई. आधी लॉयल्टी है यहाँ पर हम चाहते हैं कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा आराम दें, ना भी हो सम्मानजनक तो हो, लेकिन आधी जो जूम का अत्याचार है और जूम लिंक का इस टाइम पे शुरू करो, इस टाइम पे खत्म करो. अभी हमारे पास कोई 50,000 के लगभग दर्शकों को हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं. तो वो दुनिया के हर कोने से. IIT मद्रास के लड़के अफ्रीका में काम करते हैं, होंडुरास में वो केला लगवाते हैं, सिंगापुर में जहाज की मरम्मत करते हैं. तो मुझे उन लोगों की वजह से भी हम लोगों को, और वो सारे लोग हिंदी भी नहीं जानते थे. भारत एक महादेश है, तो मुझे कहते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन थोड़ी अंग्रेजी स्वीकार करनी पड़ेगी और थोड़ा अपने आप को अनुशासन देना पड़ेगा. जो डॉक्टर बाद में आए हैं मैं उन सबों का स्वागत करता हूँ. नाम लेके तो मैं नहीं कर सकता हूँ. अभी अब हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे. एक दो डॉक्टर बाहर से भी हैं, दरभंगा के ही हैं लेकिन यूके में प्रैक्टिस करते हैं. मैं उन लोगों को भी बुलाऊंगा, वो मुझे सुन भी रहे हैं. सब हम लोग ऐसा करेंगे समय बचाने के लिए, मैं बारी बारी से आपको इन्वाइट करूंगा और आपको यहाँ आकर, चूंकि बाकी लोग भी सुन सके बाहर के, आप अंग्रेजी बोलिए, हिंदी भी बोलिए. आप अंग्रेजी में थोड़ी हिंदी मिला दीजिए, हिंदी में थोड़ी अंग्रेजी मिला दीजिए. हमारा रेडियो से भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो उनको भी सुविधा हो जाएगी.
और आपकी टिप्पणी, आपके कमेंट्स जितना फोकस्ड होंगे उतना ही अच्छा होगा। देवीलाल शर्मा जी कलम कागज लेकर, देवीलाल कलम कागज ले लो, कलम यहाँ है, एक स्क्रिप्टिंग कार्ड ले लो। देवीलाल जी कलम कागज लेकर आपके प्रश्न, he will make a note of your questions, and after we have got about some questions for the next 10 minutes, we will give him another 5 minutes to answer whatever he can. But even on drinks which will be served here, we can have a discussion with him, and then we will invite our principal Ruth Sinha ma'am to make her presidential remarks. But now in the series of comments, may I first invite Dr. Amod Jha, who is the local secretary of Indian Medical Association. He is a physician and he is an independent citizen, not working in a paid job, as far as I know, anywhere. Dr. Ara Prasad, Dr. Utsav आए हैं, Dr. Utsav आ बताइए. Then I will invite Dr. Utsav. So young and not so young, young and not so young. So we will go in that order, and then I will take a doctor from UK, and then if time permits, I will also invite senior doctors to listen. But at the moment, I take the permission of more senior doctors to relax and listen, and to see, most importantly, and to see किस तरह का शहर, किस तरह का दरभंगा, किस तरह का प्रांत और भारत, वे ईश्वर करे अभी 50 वर्ष कम से कम और रहे हमारे साथ, वह छोड़कर जाने वाले हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका आशीर्वाद इन सारे यंग लोगों के साथ होगा। डॉक्टर आमोद झा, प्लीज, एंड डॉक्टर उत्सव, यू विल बी द नेक्स्ट, एंड डॉक्टर रूपेश, इफ यू आर लिसनिंग, you will be the third. Hi Rupesh, Papia, please ask Rupesh to be ready. Yes Rupesh, and Papia, you can switch his microphone on when I tell you. Rupesh, can you speak in Maithili when it is your turn? Okay, or in Hindi. It will be wonderful to listen to Hindi from UK. Right, Dr. Sahab, please. Amod Jha. मैं सर्वप्रथम IIMA दरभंगा की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, आप लोगों का हार्दिक नमस्कार करता हूं। यहाँ हमारे काफी सारे सीनियर रेस्पेक्टेड कलीग्स मौजूद हैं और हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि हम चिकित्सकों से जुड़ा हुआ ये आज का टॉपिक है टेलीमेडिसिन। हालांकि हम लोग बहुत ज़्यादा इससे पॉपुलर नहीं है, फैमिलियर नहीं है इससे, लेकिन हम सलाह देते हैं देवीलाल शर्मा जी को कि इस टेलीमेडिसिन को कुछ न कुछ तो सब जानते हैं, लेकिन इसका ओरिएंटेशन ज़्यादा यंग लोगों के बीच में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो गांव देहात का क्षेत्र है जहाँ सरकारी भी व्यवस्था नहीं खुल पाया है, तो स्वाभाविक सा वहाँ इंटरनेट भी नहीं गया है, जो कि बहुत बड़ा हर्डल है गांव देहात के क्षेत्र के लिए, इसलिए इसको थोड़ा समय लगेगा। पिछले भी दिनों हम लोगों ने देखा है कि दरभंगा में भी टेलीमेडिसिन का सेंटर खुला था, जैसा कि आप देवीलाल जी ही बताए, इसरो के माध्यम से भी ये शुरुआत हुआ था, लेकिन उतना सफल नहीं रहा। यहाँ तो अपॉइंटमेंट के लिए भी एक ऐप लॉन्च हुआ था IIMA के माध्यम से, जो उतना कारगर नहीं हुआ। करने का ये देखना पड़ेगा कि आखिर कारगर क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ मेहनत की कमी रह गई या विजन का कमी रह गया है, उस चीज को देखना पड़ेगा और उसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत है। और एक तो हम डॉक्टर पेशेंट के बीच में गूगल बाबा आकर के हम लोग का नाक में दम किए रहते हैं कि कहीं किसी कम पढ़े लिखे या ज्यादा पढ़े लिखे या सामान्य लोग कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले गूगल बाबा से वो कंफर्म हो लेते हैं, तब किसी के क्लिनिक में आते हैं। वो डॉक्टर जो उनको बताएंगे या पढ़ाएंगे उससे ज्यादा वो खुद ही पढ़ाने लगते हैं, जिससे हम लोग के बीच में एक समस्या बनी हुई है गूगल बाबा। हालांकि अच्छी चीज है, अवेयरनेस है, लोग जानना चाहते हैं,
लेकिन कंटेंट हर जगह सही नहीं रहता। प्रॉब्लम ये होता है, कंटेंट सही रहे, कोई भी आदमी पढ़ने वाला उसको पढ़े तो उसका इंटरप्रिटेशन बेहतर हो सकता है। मेरा आलतू फालतू कंटेंट को लेकर के ही डॉक्टरों के बीच में आ जाते हैं और डॉक्टर के नाक में दम दिए रहता है, ये हम लोग के बीच में समस्या है। अतिरिक्त में जो भी टेलीमेडिसिन का जो भी पक्ष अभी आपने बताया ड्रॉबैक, हम समझते हैं समय के साथ धीरे धीरे ये सब सारा चीज कम हो जाएगा, सुधार होगा। आप काफी इस चीज को इम्प्रूव करिएगा। और आपको पहले भी हम लोगों ने बताया था कि आपको और मेहनत करने की देवीलाल शर्मा जी आपको जरूरत है। और आखिर हम चिकित्सक आप ही के बनाए हुए, चाहे IITN हो, चाहे BITN हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी से हो, आप ही लोगों के बनाए हुए सारे इंस्ट्रूमेंट हम लोग जब यूज करते हैं, हम लोग को तो उतना नॉलेज नहीं होता है। इसलिए काम तो ऐप बनाने का हो या और कुछ बनाना है, काम तो आप ही लोग करिएगा, हम लोग उसको यूज करेंगे, हम लोग उससे फैमिलियर अपने आप को होने का प्रयास करेंगे। क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है, हम किसी भी उम्र के किसी भी वर्ग के चिकित्सक हो, हम लोगों को अपडेट होना पड़ेगा। वो आप ही लोग प्रोवाइड करा सकते हैं। काफी लोग तो हम लोग मेडिकल अपने सेल्फ स्टडी से होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से होते हैं, लेकिन ये आपका जो ऐप आने वाला है या आ चुका है, हम उम्मीद करेंगे कि हम लोग को एक नया और दिशा और दशा दे, हम लोग को भी संतुष्टि होगी। खास करके जो यंग जनरेशन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या नए नए चिकित्सक लोग हैं, वो इन सुविधाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा करके मरीज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद ऑर्गेनाइजर साहब, IIM को मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Utsav. Dr. Utsav is a young pediatrician. He has been educated at Mahatma Gandhi Medical College, Jamshedpur, and then he did, I think, postgraduate studies at Bangalore. Am I right? Yeah. So, yeah. And then I will invite Dr. Khaitan. Dr. Khaitan, are you here, please? Okay, sorry. And then, we'll go in that order. Then I have a doctor waiting in the UK. Dr. Utsav. Rupesh, please bear with us. Local constraints are more important. आप कंसल्टेशन करो तो तब तक डॉक्टर खैतान करेंगे। डॉक्टर खैतान, if you don't mind, please. आप यहाँ आएंगे, वहीं से बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? Okay, Rupesh, so are you ready? एक बार उसका देवीलाल जरा इनका वॉइस यहाँ ऑन कर सकते हैं ताकि हम सारे लोग so that we can hear Dr. Rupesh. Rupesh is already here. Dr. Rupesh belongs to Pindaruch in Darbhanga. He did MBBS at Kilpauk Medical College. Then he, like many other Indian doctors, migrated to the UK, and he's currently an MRCGP, member of the Royal College of General Physicians, with permission to engage in some private commercial practice as well. So, can you? No, I'm not able to hear you. Then can you speak on my phone? No, I mean, we are not able to hear you, Dr. Rupesh. Can you hear me now? Yes, right. very much. Please Yes, go tell on. me. Well, first of all, thank you. Thank you for giving me the opportunity to speak. And Rupesh. I don't know whether I should speak in English or should I speak in Maithili or Hindi. I can't see the audience. So सर ने बोला है कि आप हिंदी या मैथिली में बोलिए तो अच्छा ठीक है, नहीं थैंक यू। तो सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद देवीलाल जी आपका। आई थिंक जैसे मैं तो डॉक्टर श्री चौधरी काका ही बोलूंगा कि टेलीमेडिसिन जैसा हमको सबको पता है कि आपने जो काम किया है और जितनी इंफॉर्मेशन दी है, डॉक्टरों को कभी इस तरह से ट्रेनिंग दी नहीं गई थी। तो हमारा जो वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम अवे फ्रॉम पेशेंट, डॉक्टर ने कभी इस तरह से कभी सोचा नहीं था। लेकिन ऑब्वियसली विद कोविड लास्ट 2 years हम सभी ने एक अलग लेसन लिया है इस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट का। एंड आई थिंक विद टेलीमेडिसिन इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हम इसको जितना मैक्सिमाइज कर सकें, जितना इसकी पोटेंशियल्स यूज कर सकें,
प्रॉब्लम डेफिनेटली होगी छोटे गांव में जहाँ पे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है एंड ऑल दिस थिंग्स, लेकिन वी कैन गेट ओवर ऑल दीज हर्डल्स। ये जितनी परेशानियां हैं इसको हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टेलीमेडिसिन को जब तक हम मरीज के साथ एक लेवल ऑफ कंटिन्यूटी नहीं बना के रखेंगे ताकि मरीज और डॉक्टर की वो रिलेशनशिप बन पाए, उसके बाद टेलीमेडिसिन डेफिनेटली इट बिकम्स वेरी इजी टू ऑपरेट। शुरू में परेशानियां होंगी, मरीज को नहीं पता चलेगा, डॉक्टर नहीं समझ पाएगा, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी टेम्पररी एंड शॉर्ट टर्म। इन द लॉन्ग टर्म वंस एक रिलेशनशिप बन जाएगी डॉक्टर और मरीज के बीच में, सो दीज थिंग्स बिकम इजी। एंड पर्सनली टेलीमेडिसिन हम यहाँ एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, बिना इसके काम नहीं हो पाता है। एंड आई वुड होप एंड आई वुड प्रोबब्ली वर्क हार्ड कि इस चीज को हम अपने गांव तक ले जा सके, और इस संदर्भ में हम प्रयास कर रहे हैं टू स्पीक टू द लोकल टीम एंड लोकल डॉक्टर्स। ऑब्वियसली इसमें गवर्नेंस की इश्यूज होगी, मैनेजमेंट की इश्यू होगी, लेकिन ऑल दीज थिंग्स आर बेसिक हर्डल्स जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन द की फोकस यही रहना चाहिए, जो मरीज जो पहले डॉक्टर को नहीं देख पाते थे बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस, टू हैव अ सेकंड ओपिनियन, टू हैव एक सलाह, वो जरूरी है। एंड आई थिंक टेलीमेडिसिन विल डेफिनेटली हेल्प अस। Thank you, Rupesh. Anything else you want to say? I mean, any question you have? I think from my question definitely would be about logistics and how we facilitate this. So clearly, I think we can have an offline conversation after this. Sure, thank you. How we can. Yeah. But definitely, I think you will have all our support. जो भी support हम यहाँ से कर सकते हैं, I'll definitely connect with you. I have already taken your contact. Thank you. Thank you. डॉक्टर खेतान ने कहा है कि उनको अभी कुछ पब्लिकली कमेंट्स नहीं करना, तो वो बोलेंगे। और डॉक्टर प्रसाद साहब कुछ कहेंगे? सर आपको वही माइक दे देते थे, आपको यही से। टेलीमेडिसिन की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको लगता है कि मरीज के साथ न्याय नहीं है अगर हम लोग टेलीमेडिसिन पर ही जो है सो रह जाए। अभी मैं सिरसा गया था नेपाल, एक कैंप अटेंड करने। वहाँ 200 मरीजों में 90% पेशेंट जो थे बैक पेन के थे, शोल्डर पेन के थे, नी पेन के थे, 90% पेशेंट, और दवा खा कर तबाह हो रहे थे। दवा सब लोग दवा लिख देते थे, टेलीमेडिसिन वगैरह की बात जो हम करते हैं। आज इतना किडनी फेलियर हो रहा है, इतना जो है रीनल फेलियर हो रहा है, गलत एडवाइस से ही हो रहा है। टेलीमेडिसिन से हम उससे दवा का एडवाइस कर सकते हैं। इसलिए हमारा एक सजेशन है कि जो भी माध्यम हो, टेलीमेडिसिन हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, फिटनेस के लिए हम लोग जो है सो प्रयास करें, और एटलीस्ट 3 एस्पेक्ट को तो एक जनरल आदमी भी कवर कर सकते हैं, दैट इज डाइट, न्यूट्रिशन प्लस एक्सरसाइजेज एंड थर्ड मेडिटेशन। अगर इन 3 चीजों को हम संभाल लें तो हमको लगता है कि हमारी नौबत ही नहीं आएगी टेलीमेडिसिन एंड डॉक्टर्स के पास जाने की। 90% पेशेंट्स को हम इससे ठीक कर सकते हैं। इसलिए हमारा सजेशन है कि हम लोग एज ए डॉक्टर, एज ए नॉन मेडिकल मैन इसको शेयर करें और प्रमोट करें कि आपको डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इसका उपाय करें। तो हमको लगता है समाज की सेवा इससे ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती। धन्यवाद। प्रोफेसर विद्यानाथ शाह इसी कॉलेज के प्रिंसिपल थे कुछ दिन पहले तक, और काफी मिथिलांचल की वनस्पति पर अगर किसी एक साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा काम किया है तो प्रोफेसर विद्यानाथ झा के काम से अधिक मुझे किसी के बारे में बता दीजिए। और
वनस्पतियों से ही मनुष्यों के लिए दवाएं ली हैं। तो मैं प्रोफेसर विद्यानारायण झा से कहना चाहूँगा कि सर आप एक आध 2 मिनट हमारे पास आपको सुनने का कम से कम 5-6 घंटा टाइम होता तो बचा। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैडम कॉलेज की तरफ से मैं अभिनंदन करता हूँ। एक ही प्रश्न है, टेलीमेडिसिन तो बहुत विशद विषय है, डॉक्टर लोग भी इस तरह से कह रहे हैं, हम लोग सुन ही रहे हैं। कोरोना के समय में किस तरह से टेलीमेडिसिन का जो कारोबार है वो आगे बढ़ा है, इस पर जरा हम कमेंट चाहें, कितना बेनिफिट उससे हुआ, आगे क्या होना। देवीलाल नोट करना, कोरोना के टाइम में टेलीमेडिसिन से क्या फायदे हुए, क्या लाभ, has it been effective, has it helped? जी, थैंक यू सर। डॉक्टर एल.के. सिन्हा साहब, डॉक्टर किशोर साहब, डॉक्टर मिसेस सिन्हा मैम प्लीज। IIT की तो आप वो कहते हैं पेरेंट टीचर एसोसिएशन की भी प्रेसिडेंट, ओके। Doctor and Mrs. Sinha gave us a student, and that student went to Harvard but came back to India for us. कुछ नहीं कर रहे आप, डॉक्टर प्रसाद, नारायण प्रसाद, आइए प्लीज, डॉक्टर प्रसाद प्लीज। Until recently, Dr. Prasad was the superintendent of such a mouthful of words, was superintendent of Darbhanga Medical College Hospital, one of the oldest in India. And I must also tell those that are not here that at one point of time, and I can speak for DMCH until 1972, it was considered among one of the best hospitals in India. Dr. Prasad is also a student of this medical college, and he had the great honor of having been its superintendent. I hope I pronounced it correctly. Until very recently. And well, here is Dr. Prasad. Thank you so much, Mr. Dr. Professor Sri. You have organized so well this by your Funds Charitable Trust and the IIT Alumni Chennai. So it's a great mission which you are providing. You have met me earlier also for your organization working for the poor and sufferings in the field, invited also. But this vision that you have today begun here in Darbhanga with Mr. Engineer Devilal, and have gone through all these things. What thing, telemedicine, in my opinion, it is a medicine in which the patient is at one end and the doctor is at one end. And it is an umbrella word which covers these two elements under which has a distance between a patient and a doctor. And this also, telemedicine these days are a commonly word is e-health or e-medicine. But there is a difference, definitely. And what you have all here, आप लोगों ने जो कुछ भी बताया इसके बारे में, तो ये जिस तरह से इसको लीजिए, ये अच्छा तो है। आप हर बात जैसे इन लोगों ने 3-4 डिजीजों के बारे में कहा है, डायबिटीज के बारे में इन्होंने कहा है, हाइपरटेंशन के बारे में इन्होंने कहा है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां लेकर के चल रहे हैं जिसमें डोज एडजस्टमेंट, पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल या उसका ब्लड प्रेशर लेवल, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो वो अगर कोई जगह मिल जाता है जहाँ गाँव में, सुदूर जगहों में, जहाँ वहाँ अगर कोई डॉक्टर से संपर्क करता है मरीज और उसको बताता है कि इसका ब्लड प्रेशर यही है, तो उसका डोज रिड्यूस होना चाहिए या उस दवा का डोज बढ़ाना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि अगर डायबिटीज की दवा ले लिया जाता है, आप जानते हैं कि डायबिटीज की दवा लेने से बहुत रोजा का दिन आया है रमजान का, इसलिए हमारे बहुत सारे मरीज, मैंने देखा है कि बहुत सारे मरीज गांव में वही दवा खाते रहते हैं जो खाते आए, जबकि उनको उनके खाने पीने की शैली बदल जाती है। मैंने उन डॉक्टरों, उन मरीजों को देखा है जो मेरे इमरजेंसी में आए हैं और उनका ब्लड शुगर काफी लो रहता है, दैट इज 30 के आसपास, बेहोश रहता है। तो ऐसे कुछ
लोगों को जो सुदूर जगहों में रहते हैं उनको अगर इस तरह की मदद मिल जाए टेलीमेडिसिन के द्वारा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और इस जगह का कोई अगर ये ऐप बनाते हैं या कोई मशीन बनाते हैं और वहां पर इसको मिल जाता है तो मेरी समझ से तो बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग बहुत लोगों का, आप कहते हैं लोग इट इज टॉय फॉर द बॉयज, नॉट एग्जैक्टली नॉट द टॉयज फॉर द बॉयज, इट इज मच मोर बेटर देन द टॉयज फॉर द बॉयज। इट इज हेल्पिंग पीपल, इट इज they are just giving you such an help for which the patient is desirous and the patient reports this. मैं ये कहूँगा कि मरीज उस मदद का हकदार है, उसे ये मिलनी ही चाहिए। और जब मिलती है ये मदद तो निश्चित ही बहुत से और लोगों से। दूसरी बात ये भी, वो डॉक्टर जितना जानता है उतना जानता है, लेकिन अगर वो कुछ जो नहीं समझ में आता है वो अपने सीनियर से पूछता है और तब वो मदद उस मरीज को डिलीवर करता है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तीसरी बात कि आपने कुछ बैरियर्स रखा, तो उन बैरियरों को दूर करने के बहुत सारे उपाय हैं और किए जाएंगे, लेकिन एक शुरुआत तो करें, एक पहल तो करें। और आपने जो एक पहल किया है, एक शुरुआत की है, उसके लिए आप निश्चित ही धन्यवाद के पात्र है। और करने को तो अभी बहुत कुछ है, बहुत किया जाएगा। कोविड के समय में आप लोगों ने देखा कि कितनी मदद की मैंने भी, ठीक है। इसमें प्रश्न उठता है, क्या टेलीफोन कॉल से किसी की मदद करना क्या टेलीमेडिसिन है? नहीं, एग्जैक्टली नॉट। लेकिन हम लोग वीडियो के समय में जो हम लोगों ने मदद की, अपने हॉस्पिटल में मदद की, दूसरों को मदद की, उनको देख करके मदद की, सहायता की, दवा प्रिस्क्राइब किया, दवा लिया, दवाई चेक किया, तो ये सब जो मदद हुई, डेफिनेटली जो ग्राफ था वो बहुत ही ऊंचा चला गया है। और ऐसा आने वाले दिनों में भी बहुत सारे मुसीबतों को फेस करेगा। और जहां तक स्वास्थ्य की बात है, वो तो हर आदमी का कर्तव्य है कि अपनी निरोग काया को बना कर रखे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, मस्त रहे। अंत में जाते जाते में जो हमारे बहुत ही पुराने हमारे दोस्त हैं श्री जी, वो प्यार से मैं या सब लोग शिकारी कहा करते थे, आज फिर इन्होंने शिकार कर लिया है डॉक्टरों के बीच और उन्होंने इतना बढ़िया लक्ष्य रखा है। और मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि क्या हो, इससे क्या हो जाए, कुछ 10-20 मरीजों के लिए कर देंगे तो क्या हो जाए, इससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, 10-20 मरीज ठीक हो जाएंगे। तो मुझे एक साधु की कहानी याद आती है कि एक साधु समुद्र के किनारे जाया करता था और जाया करता था तो देखता था कि और बराबर वहां पर समुद्र के किनारे 2-4 उछलियां तरफ पे उछल करके चांद दे दिया करते थे। तो साधु उसको क्या करता था, किनारे पर जो मछलियां आती थी उसको वापस उस पानी में फेंक दिया करता था। जाने वाले उधर से जा रहे थे, कहा कि क्या साधु या क्या कर रहे हैं, इतने सारे लोग, इतने सारे सब कुछ और इतनी सारी मछलियां, इतना बड़ा किनारा, कितनी मछलियों को अब फेंकते रहेंगे वापस। साधु ने एक मछली को उठाया और उसे वापस उस पानी में छोड़ दिया और कहा कि फर्क इस मछली के लिए पड़ता है और आपने जो काम किया है, अगर 2 मरीजों को भी फायदा होता है तो फर्क उस पेशेंट के लिए पड़ता है। और मैं इसके लिए फिर से आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और 2 पंक्तियां, बिकॉज की मेरे अंदर बहुत सारी बातें थी जो मैं शेयर करता समय का ये बात, लेकिन मैं 2 पंक्तियों में सारी बातों को कह देना चाहूंगा। कहते हैं कि माना कि सारी जमीन को गुलशन बना सके न हम, सुनिएगा, माना कि सारी जमीन को गुलशन बना सके न हम, ये क्या कम है कुछ खाड़ी कम कर सके काटा, ये क्या कम है कुछ खाड़ी कम कर सके जिधर से गुजरे हम। धन्यवाद सबके शिकारी और मेला नेता है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है कि वह साधु मिथिलांचल का नहीं था, नहीं तो पकाकर खा गया हूं, क्योंकि मछली फेंकने की चीज है। राम 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 राम। Friends, Mithila is a fish eating area, so that sadhu, I am sure that Professor Prasad referred to must not have been from this part of the country. So please let's move on. Dr. Gauri Shankar Jhaji. Okay. Dr. Gauri Shankar Jhaji, please. Dr. Gauri Shankar Jhaji and I are meeting for the first time, but we have spoken for days together. And he was among the first people to encourage me and to say we could
I could ask IIT Madras Alumni Association to do this seminar here. He's an orthopedic surgeon. Am I right? Please, just about a minute or two. Thank you, sir. Thanks Yeah. for giving me the opportunity. मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जब आप कंसल्ट करते हैं तो लोकल डॉक्टर से, लेकिन टेलीमेडिसिन से आपको और जब कोरोना आया था, तब जब ऑफलाइन क्लास था तो बंद हो गया था, तब ऑनलाइन क्लास का जमाना था। तो ऑनलाइन क्लास में क्या करते थे टीचर लोग, खासतौर पे मेडिकल कॉलेज में, किताब का फोटो खींच करके और उस पर डाउनलोड कर देते थे और कुछ बातें बोल करके अपना काम कर लेते थे, क्योंकि उनको एक सेट पेमेंट करना था। और हमने एक चलन किया कि जूम क्लास का, और जूम क्लास जो है, जो कि ये मेरा नहीं था, ये ऑल इंडिया में चल रहा था, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज में इसका शुरुआत किया। तो जैसे कि अब देखिए कि यूट्यूब पर जाकर के आप तमाम दुनिया के जो अच्छे अच्छे टीचर हैं उनसे आप बात कर सकते, उनका आप लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन जब आप एक मेडिकल कॉलेज में हैं, तब आपका ये प्रॉब्लम है कि आपको उन्हीं टीचर का जो है क्लास करना पड़ेगा। और अगर नहीं आप यूट्यूब पे जाते हैं तो देखते हैं कि आप दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टरों का आप क्लास कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यही कहेंगे, टेलीमेडिसिन एक बहुत अच्छा चीज है। कोई भी चीज एक ऑप्शन हो सकता है, एक एब्सोल्यूट नहीं हो सकता है। तो इस टेलीमेडिसिन को एक ऑप्शन माने, इसको एब्सोल्यूट नहीं माने कि ये एब्सोल्यूट ठीक है। लेकिन ये टेलीमेडिसिन जब फिर कभी कोई ऐसा आफत आएगा या आसमानी आएगा, कोरोना टाइप का चीज, या आप यहाँ पर हैं और आपको इच्छा है कि हम मेदांता में किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या हम यूएसए में किसी से कंसल्ट करें, तब उस वक्त आपको इस कोरोना की दवा की, टेलीमेडिसिन की दवा की बहुत जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। Dr. Jha, any other doctor who would like to share your opinion, please? Dr. Khaitan, Dr. Khaitan has said he would not publicly comment on any of this. Please, sir. And Dr. Utsav, are you ready now? Actually, progressively we have, because of the constraints of Zoom, we have, please bear with us, we have so, running short of time, so you may have to start. Please. आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर के मिश्रा, सर्जन है, पोस्टर है। और ये जो प्रोग्राम बहुत अच्छा ही लगा, सॉरी आवाज कम जा रही है। अच्छा, ये प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा हम लोग को टेलीमेडिसिन पर। तो हम जानना चाह रहे थे कि टेलीमेडिसिन में आप क्या आर्मामेंट्स बने, आपको क्या सामग्री है या क्या उसका युद्ध लड़ने के लिए जब जाता है आदमी में कुछ न कुछ उसको रहता है, इक्विपमेंट या कोई आर्मामेंट रहता है, युद्ध की सामग्री, जिससे वो वहाँ अप्रोच करता है। ठीक है, तो क्या क्या आर्मामेंट है, क्या क्या ये चीज आपको इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि फिजिकल हम लोग पेशेंट जब देते हैं तो उससे फिजिकल कांटेक्ट, तो वो आई टू आई ठीक है, आपको दिखा दिए फोटो, लेकिन हम लोग जैसे कि उसका हाथ से उसको टच करके देखते हैं, उसका कुछ वो सब कोई ऐसा डेवलप हो, कोई ऐप डेवलप हो, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो, जो IITian सब कर सकते हैं, तो फिर वो लोग हमेशा लगे रहता है इसी में। तो वैसा कोई डेवलप हो जिससे कि सुविधा हो डॉक्टर जो वो, और ये जो है, और उसमें क्या हमको इतना आइडिया नहीं है कि आपको कर ही दिएगा, तो वो थोड़ा हम लोग जाने कि क्या आप सब कहना चाहे कि फिजिकल एग्जामिनेशन की ऐसी करते हैं, क्या 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 उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिससे कि सुविधा हम लोग को मिल रहा है। तो क्या कोई नया है इंस्ट्रूमेंट आया है, बहुत चीज तो पहले जान है, लेकिन और नया क्या आया है जो ऐसी बहुत डेवलप किया है जो कि मदद कर रहा है। ठीक, Dr. Om Prakash, please. Dr. Om Prakash, I am grateful for your time. Can I bring the microphone there itself? Please. Sorry bothering you. I'm so sorry you had to wait at the gate for so long. Please. हम लोग पहले Please. उसी रास्ते से आते थे। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग और
इसके प्रमोशन के लिए आया करते थे, तो उसी गेट से घुसते थे। और काफी साल बाद मुझे नहीं मालूम था कि इतना शानदार हो गया। उस समय तो पूरा कीचड़ और ये सब के कारण से रहता था। इस समय में अगस्त के पहले सप्ताह में हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते थे, और जितने भी महिला कॉलेजेज और ये सब होती थी उसमें जाके शिक्षिकाओं को और छात्रों को प्रेरित करते थे। संभवतः यहाँ पर अकेला मैं हूँ जो पिछले कई सालों से टेलीमेडिसिन यूज कर रहा हूँ। जी, मैं नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेते हैं। किस्सा कुछ यूँ हुआ कि मेरी वाइफ जो से हाउस वाइफ थी, तो कुछ काम धाम था नहीं, तो लोगों ने कहा कि उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए। तो वो एक कंप्यूटर वाला NI था वहाँ जाने लगी। वो कंप्यूटर सीख के आने लगी। जो भी सीखती थी तो हमको मजबूरी में सीखना पड़ता था। संगीत सीख के आए तो संगीत सीखना पड़ा, कंप्यूटर सीख के आई तो कंप्यूटर। और कंप्यूटर सीखने के साथ होता था, एक तो जानते ही ना, घर में वाइफ जो होती है सो सुपीरियर कमांड, तो उन्होंने कहा कि ये हुआ इसको डबल क्लिक करिए। मैंने कहा कि डबल क्लिक, ये हुआ फर्स्ट क्लिक, ये हुआ सेकंड क्लिक। बड़ी जोर से मजाक उड़ाया हंसते हुए, कैसे कहीं डबल क्लिक होता। लेकिन सौभाग्य से उनकी कृपा से मैं कंप्यूटर धीरे धीरे सीखने लगा। फिर बच्चे कंप्यूटर में गए तो मुझे भी शौक हुआ थोड़ी बहुत मैं भी कुछ जो लैंग्वेज होता हूँ सीख लूँ। तो मैंने B+ और C+ और कुछ एक आध और लैंग्वेज में थोड़ी थोड़ी कोशिश की। और फिर उसके बाद IIP का एक कंप्यूटर सेक्शन बना हमारा। कंप्यूटर सेक्शन में हम लोगों ने सब ऐप तैयार करना शुरू किया। मैं IIP का एक 2011 से इस्तेमाल करता हूँ। मेरे सारे प्रिस्क्रिप्शन उस ऐप के द्वारा तैयार होते हैं जी। तो मैंने टेलीमेडिसिन शुरू किया जब मेरा बेटा वापस पढ़ के आया, तो उसने GoDaddy से एक डोमेन खरीदा और मैंने अपना खुद का ये बनाया। लेकिन ये मुझे रोज का रोज सुबह से शाम तक खुद अपने ऐप पर खुद काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने अगर कुछ पहल की है तो ये संभवतः सबके जोगे। मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहता हूँ, बहुत बहुत जरूरी चीज है आज के समय में। बहुत सारे मरीज आपसे कनेक्ट हो पाते हैं और आप आराम से देख सकते हैं। इवन मैं सर्जरी का मरीज भी टेलीमेडिसिन से, मेरे स्टाफ वहां से वीडियो कैमरा से उनको दिखा दे पा रहे हैं। सर्जरी का मरीज, गायनी का मरीज, टेलीमेडिसिन बहुत यूजफुल है। जैसे हम लोग समय में ये आपका अल्ट्रासाउंड आया, सबने उसको धिकारा, लेप्रोस्कोपी आया, सबने धिकारा। टेलीमेडिसिन के साथ भी इसी तरह से कुछ लोगों को मन में ये भावना हो सकती है कि किसी काम की चीज नहीं है। मैं पिछले 10-12 साल से डिजिटल मेडिसिन और 3-4 साल से टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अब ये कंपलसरी हो गया है। जो नए NMC के कोर्स शुरू हो रहे हैं, जो हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसमें कि हम लोग कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स के लिए, तो उनको कंपलसरली टेलीमेडिसिन पढ़ना है। उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे अगर टेलीमेडिसिन करना है तो मुझे ऑनलाइन एक कोर्स करना है और तब जाके मैं टेलीमेडिसिन कर सकूंगा। हम लोगों को टाइम जी, मैं इसीलिए, मैं क्योंकि अकेला इस कम्युनिटी में मैं अकेला हूँ जो टेलीमेडिसिन कर रहा हूँ, उससे मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं एक तरह से इनका प्रमोशन करके कह रहा हूँ कि ये आप एक बार यूज करें तब पता चलेगा आपके लिए यूजफुल है और आप मदद लेंगे। क्योंकि मैं खुद से सक्षम था इसलिए मैं कर सका, आप कर नहीं सकेंगे क्योंकि आप डिजिटल नॉलेज नहीं रखते हैं। इनकी मदद लें और एक बार एक्सपीरियंस लें, उसके बाद तो पता चलेगा कितना मजेदार क्षेत्र है। थैंक यू। नहीं, माफ नहीं करना सर, मैं अपना आपका ही प्रमोशन। Well, ladies and gentlemen, I think we must appreciate Dr. Om Prakash for having taken courage and for having started use of telemedicine long ago and continuing with it. We are really running out of time and we still have some formalities to do. Those of us who are remote, who have joined us through link, please kindly mail your questions to the chat box, and I will request Mr. Devilal to answer you perhaps by mail or later if there is an answer. If there are no answers, I'm sure the software will develop to the extent to take care of problems raised by you. Now, I think I will invite Mr. Devilal to take about a minute and to answer a few questions that he can. But Devilal, you must cut it into 60 seconds because we really are running out of time. Utsav, I must apologize to you for having invited you but not inviting you.
Right. Please bear with me. I'll try to answer everything in 1 or 2 minutes for sure. And most of the questions I received are really very valid and to me to great extent familiar. So I'll not name who asked one question. Yeah. Who asked which question? I'll just keep answering the questions, right? So Google search definitely is not an answer for knowing details. So एक बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ 10 सेकंड में कि एक मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास गया बेंगलोर के अंदर बात करने, उनको बोला कि आपके पास तो कोई डायरेक्ट पेशेंट नहीं आता होगा, पहले फिजिशियन के पास जाना होगा, फिर किसी के पास जाना होगा, फिर पता लगता होगा कैंसर है। बोला नहीं, आजकल आने लगे। मैंने कैसे आते हैं? गूगल सर्च से। बेटा गूगल सर्च से कैसे आ जाते हैं? कैसे पता लगता है कि कैंसर है? कि आते हैं बहुत सारे लोग और उनमें से किसी को कैंसर होता नहीं है। ये आंसर है उसका। एंड वी आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स कि क्यूरेटेड कंटेंट कैसे जाए पेशेंट के पास, तो वी विल डू क्यूरेटेड कंटेंट, नॉट द गूगल सर्च। गूगल सर्च will drive you to the cancer and all that things. Relationship logistics, yes, we have to do. एक चीज जो सबने बोली है वो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। सभी ने लगभग बोला है एक चीज कि जो पेशेंट है उसको सजेशन और जो कैसे वेलबींग या वेलनेस का जो बात है उसमें आ जाती है, वो बहुत जरूरी है। डेफिनेटली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी वांट दैट इज व्हाट आवर प्रोडक्ट इज एक्चुअली दैट यू हैव अ लीफ लेवल डॉक्टर हु यू कैन गो टू। आपके दांत में दर्द है, अपने डॉक्टर के पास जाओ। आंख में दर्द है, आंख में स्वेलिंग है, अपने डॉक्टर के पास जाओ। आपके पेट में दर्द है, अपने डॉक्टर के पास जाओ। आपको नहीं सोचना है कि आपको आई मीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरोसर्जन के पास जाना है, ऑफिस क्या होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है। कॉमन मैन नहीं सोचता। वी आर ट्राइंग, वी आर थिंकिंग फॉर regional roads, we are thinking for villages, we are thinking for small towns, right? We are not targeting 0.01% of the population. So definitely we are taking care of that. And some other things like physical कैसे होगा उसका है, तो उसके दो आंसर हैं बहुत ही शॉर्ट में। IoT जो मैंने बोला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो बहुत डेवलप हो रही है, बहुत सारी इन प्लेस है। आई एम गोइंग टू मीट वन पर्सन इन पटना टुमारो। वो IoT प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और आप पेशेंट के पास बैठे, पेशेंट के पास IoT डिवाइस है, वो आपके पास डेटा भेजेगा। ये एक चीज हुई, पर अनुभव नहीं होगा। फिर भी आप जो टच करके देखते वो नहीं होगा, पर क्या कर रही है, जैसे आप आई मीन मेटावर्स और उन सब से तो उससे basically you can be present with the patient and feel him like your doctor is present. So such technology are being developed, and I feel the future is great and it will be very helpful. Thank you. ईश्वर ने चाहा तो हम लोग मैडम रूपकला सिन्हा को रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन पूरे दिन का सेमिनार हो, लंच डिनर का इंतजाम IIT मद्रास एलुमनाई एसोसिएशन करेगा और कुछ मैडम रूपकला जी करेंगे और हम सारे दिन का करेंगे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने लोग इतना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज अब इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं जिनको नहीं बुला पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं और सारे लोग उनको सुनना नहीं चाहते, लेकिन हमारी कुछ लाचारियाँ हैं। वी आर sorry not taking all comments and questions just now. Please bear with me. Now, with your permission, may I request the chair, Professor Devilal Sharma, to give her remarks. Originally, we had intended that she could speak for at least about 5 minutes. She has been a professor used to speaking for 50 minutes at a stretch. But today, I will request you, ma'am, to cut your remarks to about 3 minutes. And then I will request Nisha and her colleagues to propose a vote of thanks. Please bear with us. Thank you so much, sir. And I feel so privileged to address this auspicious crowd. We have all the educationists, great educationists of this town, Devilal Sharma, sir, Indradi, and Dr. Definitely. And the doctors and the eminent doctors of the place.
And it has been a very, I just cannot express my feeling to address this auspicious gathering. And I first thank Sri Sir, who met me a few days back. And till that time, telemedicine was a very new term for me. I heard that this term about 10 to 15 days back when Sir said. And unconsciously, we have been using telemedicine since ages. Is it been अवेयर हुए ही हम लोग टेलीमेडिसिन का मदद लेते ही रहे हैं हमारे फ्रेंड्स सर्कल में, चाहे हमारे फैमिली में ही अगर कोई डॉक्टर है और हमें कोई परेशानी होती है तो व्हाट्सएप में भेज देते हैं ये मेरी परेशानी है और उसका जो मतलब हाँ की जो रेमेडी है उसको जरा भेजो. So I know we have been using telemedicine. And it has been a boon to the society. And first of all, I will be failing my duty if I don't have the Panchacharya family who is doing such a noble work to benefit the society in every way. There has been organizing various programs on communicative English and all in our college. And at that time I was a junior professor and I have taken the initiative to organize those programs. And I would like to read out certain points how telemedicine has been beneficial during the pandemic. What are the benefits of telemedicine? It allows you to talk to your doctor, as Dr. Sharma said, and sir, your speech was very informative. We came to know how it can help us in our daily life, and allows you to talk to your doctor live over the phone or video chat. Allows you to send and receive messages from your doctor using chat messaging or email. Allows for remote monitoring of patients, save or travel time, transportation costs, reduce wait time for services, reduce number of visits to clinic. What can you use? What can you use telemedicine? When can you use telemedicine? To contact your healthcare provider about the management of your health generally or about management of an existing health condition during the COVID-19 outbreak. What types of care can you get using telemedicine? Screening for COVID-19, testing recommendations and guidance on isolation or quarantine, general healthcare, that is wellness visits, blood pressure control, advice about certain non-emergency illnesses like common rations, prescription for medication, nutrition counseling, mental health counseling. So now telemedicine has proved a boon to the society. So once again, I thank my colleagues who have taken great pain to make this program a success. And as the speaker has said, we have a full day event on this. Thank you so much, everyone. Thank you. Well, as I said, we could go on, but on behalf of Panchacharya Trust, I thank you very much. And now I invite Dr. Nisha, who is, please, sir, please, please. अब 2 मिनट हमारे पास एक्चुअली 30 सेकंड है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इसको एक आधा मिनट बढ़ा सकते हो, प्लीज इफ यू डोंट माइंड. It's time for one of thanks. It is not good for me to introduce myself, but I want to introduce
myself in brief. I am Dr. Fazal Salahuddin, Assistant Professor and Head of Department of Botany, as well as IPC Coordinator of this college. Actually, I have been a speaker on this topic, but today I have been given a work on vote of thanks. So, for the first time, I am delivering here as a vote of thanks. For the first time, I feel I'm grateful to Professor Luke Kalasina for her August presence here, because in spite of her hectic schedule, and as well as I am also grateful to Professor Nisha Saxena for welcome address. On behalf of Himalayan College, I feel highly indebted to Mr. Devilal Sharma for his valuable and most indispensable information regarding the telemedicine, because we have come to know the nitty-gritty of the telemedicine. Further, because most of the person I do not know, and vice versa, I have mentioned these things. I am also thankful to Professor Sri Chaudhary for nice comparing, and I am grateful to Dr. Amod Jha, Dr. R.K. Prasad, Professor Vidyanath Jha, Dr. R.R. Prasad, Dr. Goli Shankar Jha, Dr. K.K. Mishra, and Dr. Om Parga for providing very enlightened inputs regarding the healthcare system. Last but not least, I am also grateful to all non-teaching staff for his logistic support. Thank you very much.